Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, we spoke about the different games that we play in our previous chapter. Now we are going to talk about traditional games and martial arts in this chapter. ट्रेडिशनल गेम्स मतलब वो गेम्स जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, एक ट्रेडिशन से आगे ट्रेडिशन में बढ़ते गए हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ आवर कंट्री इन दिस चैप्टर. ओके, तो आप सोचते होंगे कि जब आपके पेरेंट्स कभी कभी आपको बोलते हैं कि जब हम छोटे थे ना, हम ये गेम खेलते थे, हम वो गेम खेलते थे. डोंट दे से दैट कि कोई आप कभी कभी आपके पेरेंट्स बोलते थे, आपके फादर बोलते होंगे मैं तो जब छोटा था मैं गिल्ली डंडा खेलता था. ओके, आपकी मम्मी कुछ और गेम बोलती होगी, इजंट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज. सो माई मदर प्लेज डैश इन हर चाइल्डहुड. ओके, फॉर एग्जाम्पल खो खो. Okay, my father plays dash in his childhood. So let's talk about these games. So many games that originated long ago in Bharat and still continue to be a part of our culture are known as traditional games. तो ये गेम्स ज़्यादा करके हमारे कंट्री में खेले जाते हैं. ओके, सो देर आर सो मेनी ट्रेडिशनल गेम्स प्लेड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ भारत. लेट्स नो अबाउट देम इन डिटेल. चलो देखते हैं भारत के अलग अलग रीजन्स में, ओके, अलग अलग क्षेत्रों में कौन से गेम्स खेलते हैं और एंड इफ पीपल स्टिल फॉलो देम और नॉट. आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप भी बहुत गेम्स खेलते हो. चलो लेट्स सी इफ यू नो अबाउट ऑल दीज गेम्स और नॉट. फर्स्ट इज कबड्डी. ओके, नाउ कबड्डी इज एन एंशिएंट आउटडोर गेम प्लेड थ्रू आउट द एशिया. ज़्यादा करके ये एशियन गेम है. The game requires both skills and strength. It is played between two teams consisting of 7 players. The teams occupy opposite halves of a field and take turns sending a raider into the other half in order to win points by tagging the members of the opponent team. So, कबड्डी में क्या होता है, 7 प्लेयर्स होते हैं हर टीम में. तो एक टीम से एक प्लेयर जाता है दूसरे टीम के एरिया में. ओके, नाउ दैट पर्सन इज कॉल्ड अ रेडर. और उसको क्या करना होता है, उसको उनके दूसरे टीम के लोगों को टच करके वापस आना होता है. वो जितने लोगों को टच करेगा उतने लोग आउट हो जाएंगे. Alright, so you must have seen this game because whenever there is a Kabaddi Premier League on TV, you must watch it. It is really very interesting. Alright, now the raider then tries to return to his own half, holding his breath and chanting kabaddi kabaddi kabaddi, okay, during the whole raid. So ये एक रूल है कि द प्लेयर जो भी है रेडर होता है उसको कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी बोलना होता है और उसको अपना मतलब ये बोलते वक्त कभी भी ब्रेथ नहीं छोड़ना है. अगर ब्रेथ छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया तो वो आउट हो जाएगा. द नेम कबड्डी ऑफन चैंटेड ड्यूरिंग अ गेम डिराइव फ्रॉम अ हिंदी वर्ड मीनिंग होल्डिंग ऑफ ब्रेथ. कि कबड्डी का मतलब है होल्डिंग ऑफ ब्रेथ. ओके, विच इज इंडीड द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्ले. It is the national game of Bangladesh and the state game of Punjab, Tamil Nadu and Andhra Pradesh in Bharat. Alright, so I hope now when you get a chance to play with your friends, you must attempt this game. Now let's talk about Kho-Kho. Kho-Kho ranks as one of the most popular traditional sports in Bharat. It is played by teams of 12 members who try to avoid being touched by members of the opponent team. Okay, in Kho-Kho, one team sits on knees in the middle of the court in a row with alternate members in the row facing opposite directions. तो एक सीधा बैठता है, एक उल्टा बैठता है, एक सीधा बैठता है, एक उल्टा बैठता है. ऐसे वो 12 जन का टीम होता है. Okay, now the other team may send 2 or 3 members in the court. तो ऑपोजिट टीम से 2 या 3 मेंबर्स आ जाते हैं कोर्ट में. ओके, द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज टू ट्राई टू टैग द ओपोनेंट्स. तो जो सिटिंग टीम में के जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, जब वो कोई टैग करता है, उनकी टीम वाला टैग करता है, उनको उठ के उनके पास में जो भी ऑपोजिट टीम का मेंबर होता है उसको उनको टच करना है.
तो वो आउट हो जाता है. ओके, द चेजर्स कैन रन ओनली इन वन डायरेक्शन. तो एक ही डायरेक्शन में वो लोग भाग सकते हैं. दे कैन नॉट रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सिटर्स. तो जो बैठे उनके बीच में से नहीं जा सकते, उनको कट नहीं कर सकते. दे हैव टू रन राउंड द एंटायर रो टू रीच द अदर साइड. The other option is to pass the chasing job to another sitter whose back is facing you as you are running. The chaser touches the sitter he wants, usually nearest to the target. So जो भी target होता है, opponent team का जो भी member होता है, वो बन जाता है target. Okay? And shouts "Kho" to signify the change of guard. तो जब वो खो बोलता है और अपने टीम मेंबर को टच करता है, जो फिर उठ के opponent टीम वाले को पकड़ता है. Okay? So, the objective is to tag all the opponents in the shortest time possible. If the other team takes longer, the former teams win. Okay? So, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, तो भागते वक्त वो ऐसे एक ही डायरेक्शन में भागते हैं और उनका मेन पर्पस होता है ओपोनेंट टीम मेंबर को टैग करना, मतलब टच करना. ओके, और जब भी वो जो सिटर होते हैं, जो उनके टीम वाले जो नील करके बैठते हैं, उनको उठाने के लिए उनको टैग करना पड़ता है खो बोल के, तो वो भाग के जाके वो टारगेट को पकड़ लेते हैं. और अगर एक टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन में सारे खिलाड़ी आउट नहीं हुए, तो जो टीम होती है, ऑपोजिट टीम होती है, वो विन कर लेती है. Alright, now let's talk about boat race. Kerala boat race is an annual event that takes place in the month of August or September in Alappuzha. Okay, now this is a place in Kerala. Okay, it is also known as the snake boat race, which is the most attractive part of the festival of Onam. तो ओनम फेस्टिवल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. इसमें अलग अलग ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, रंगोली होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसमें से मेन इवेंट होता है ये बोट रेस. स्नेक बोट रेस कहलाते हैं. The brilliant performance of the rowers portrays the inherent sporting zeal and sportsman spirit of the local inhabitants of the southern state of Bharat. Okay, तो आप देखोगे एक बोट के अंदर कितने सारे रोवर्स हैं. Okay, जो बोट को रो करके उसको जिताते हैं. Okay, जो बोट पहले फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, that is the winning boat. Okay. Next, let's talk about martial arts. Traditionally, people have practiced different kinds of martial arts in Bharat. These were seen as methods of self-defense. Wrestling, Kalaripayattu, archery, Mallakham, etc. are some martial arts that have originated in Bharat. Okay, तो apart from these games, भारत में अलग अलग मार्शल आर्ट्स को भी जगह दी है. ओके, जैसे, और ये सारे मेथड्स होते हैं सेल्फ डिफेंस के, और आर्चरी, रेसलिंग एंड ऑल दिस. सो कलरीपयट्टू या फिर मल्लखांब हो गया, दे आर जनरली प्लेड टुवर्ड्स कलरीपयट्टू इज प्लेड इन द टुवर्ड्स द सदर्न रीजन ऑफ इंडिया. ऑलराइट, नाउ find out the names of some traditional games from your grandparents and parents they used to play in their childhood. Now let's talk about wrestling. Wrestling is known as kushti, and wrestlers are traditionally known as pehelwan. It is practiced in an akhada. It includes techniques like clinch fighting, throws and takedowns, joint locks, pins, and other grappling holds. In ancient times, wrestling competitions used to take place between kingdoms. The wrestler who knocks his rival down was supposed to have won victory for his king. A wrestling is a physical competition between two, occasionally more, competitors or sparring partners who attempt to gain and maintain a superior position. Wrestling techniques have been incorporated into other martial arts as well as military hand-to-hand combat systems. The wrestlers build their bodies by taking proper diet, including butter, milk and almonds. They do regular exercises to maintain their health. So wrestling, okay, wrestling को ट्रेडिशनली कहा जाता है कुश्ती, और जो रेसलर्स होते हैं उनको कहलाते हैं पहलवान. जहाँ पे रेसलिंग की मैच होती है उस जगह को कहा जाता है अखाड़ा. ओके, आपने अगर दंगल मूवी देखी होगी, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस रेसलिंग ओनली.
ओके तो आप उसमें देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अखाड़ा। एक तो होता है जहाँ पे मिट्टी का बना होता है, ओके जो गांव में ट्रेडिशनली खेला जाता था, जो पुराने ज़माने में खेला जाता था। सो एज पर दिस दिस रेसलिंग यूज टू बी प्लेड इन बिटवीन टू किंगडम्स, दो राज्यों के बीच में ये कुश्ती का सामना हो जाता था, और जो भी पहलवान जीतता था, okay, he used to bring victory for his king. okay, so ये गेम बहुत ट्रेडिशनली चला आ रहा है, अभी तक खेलते हैं लोग। अब आया है एक now the wrestling which is played in the wrestling ring, okay, and it has a different method of being played in the modern times. Earlier it used to be played on the ground, in the soil itself. Okay, now the wrestlers who knocked down his rival was supposed to have won victory for the king. Okay, now it is a very physical competition. Okay, तो आप देखोगे कि कैसे एक दूसरे को their main thing is to knock them down and bring them on their back. Okay, so इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज हो जाते हैं और अलग अलग रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, जिसके हर रूल के हिसाब से, हर टेक्निक के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, नाउ रेसलिंग टेक्निक्स हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू अदर मार्शल आर्ट्स में भी रेसलिंग टेक्निक्स यूज होना शुरू हो गया है। जैसे मिलिट्री हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिस्टम में भी रेसलिंग के अलग अलग मेथड्स, टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं। ओके, अब रेसलर्स के लिए अपनी बॉडी बनाने के लिए बहुत सारा अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे रिमेन फिट। ओके, सो दे डू लॉट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो। At the same time, it is not only physical, they try to do a lot of mental exercises also to keep their calm and to get that strength. Okay, now let's talk about Kalaripayattu. Okay, Kalaripayattu is an Bharat martial art originated in Kerala, South Bharat. It includes strikes, kicks, grappling, preset forms, weaponry, and healing methods. Regional variants are classified according to geographical position in Kerala. These are the Northern style, the Southern style, and the Central. Northern Kalaripayattu is based on the principle of hard technique, while the Southern style primarily follows the soft techniques, even though both systems make use of internal and external concepts. तो आप देखोगे इसमें जो पिक्चर बनी हुई है कलरीपयट्टू की, इसमें बेसिकली जब वो फाइट करते हैं तो उसमें स्ट्राइक्स यूज़ होते हैं, किक्स यूज़ हो जाते हैं, ग्रैपलिंग, ओके, और उसमें उनके प्रीसेट फॉर्मेट्स होते हैं, वेपनरी जहाँ पे कभी सोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी शील्ड्स यूज़ होते हैं, स्टिक्स यूज़ हो जाते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर हीलिंग मेथड्स ऑल्सो। ओके, तो ये बेसिकली आप देखोगे नॉर्दर्न स्टाइल एंड सदर्न स्टाइल में डिवाइड किया गया है, also with the central style. So northern style जो होती है it is based on the principle hard technique होता है, hard technique follow करते हैं वो, और southern style जो होती है उसमें soft techniques follow किए जाते हैं। okay, although दोनों concepts में internal, okay, they make, both the systems make use of internal and external concepts. Okay, now Kalaripayattu has contributed to the traditional art and dance forms of Kerala, okay, like Kathakali and Kudiyattam. Some traditional Bharatiya dance schools still incorporate Kalaripayattu as part of their exercise regimen. Okay, तो ये जो गेम है कलरीपयट्टू उसको उन्होंने डांस फॉर्म्स में भी इनकॉर्पोरेट किया है टू एक्सप्रेस मे बी स्टोरीज। डांस फॉर्म्स में क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस फॉर्म्स में जनरली दे आर टेलिंग अस अ स्टोरी, अ नरेटिव अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. इट इज लाइक द इंडियन बैले फॉर्म. Okay, now archery. Archery is practiced all over Bharat. It is the art, practice or skill of propelling arrows with the use of a bow. Right from the ancient period, people were specially trained in the field of archery. People used bow and arrow as their main weapon in the battlefield until the development of firearms. So, आपने अगर रामायण या महाभारत देखी होगी टीवी पे, तो क्या होता है उसमें? Have they used guns?
नो, जनरली आपने देखा होगा उन्होंने गदा यूज किया है या फिर दे हैव यूज्ड बो एंड एरो. सो ये बहुत पुराने ज़माने से, okay, it has been going on. Up in modern times, people don't use bows and arrows to fight against each other. They use more of guns and other weapons which are there. But in the olden times, people used to fight with what? With either that gada, ya fir bow and arrow, ya fir swords, right? You remember that? Have you seen it in movies or in serials? Yes. So, archery is still being followed as a game now in our country. Okay. So, historically, archery has been used for hunting and combat. Okay, while in modern times, its main use is that of a recreational activity. A person who participates in archery is typically known as an archer or bowman. This archery के भी काफ़ी सारे competitions होते हैं. Okay, they are included in different Commonwealth games या ऐसे games में भी archery is a part. Okay, now let's talk about Mallakham. Mallakham is a kind of gymnastics practiced by wrestlers. It is performed both by male and female. It includes balancing acts on pole which require twist, turn and stretch. So Mallakham basically क्या होता है, आप देखोगे एक बड़ा सा पोल होता है, थिक सा पोल होता है जिसपे ये रेसलर्स, दे कैन बी अ मेल और अ फीमेल ऑल्सो, वो उसमें अलग अलग टेक्निक्स दिखाते हैं, बैलेंसिंग टेक्निक्स दिखाते हैं. ओके, जहाँ पे उनको अपनी बॉडी ट्विस्ट करनी पड़ती है. सो दिस इज लाइक अ जिम्नास्टिक्स. ओके, जिम्नास्टिक होता है इन अ डिफरेंट मैनर ऑन अ पोल. ओके, नाउ do it yourself. Write down the names of 4 martial arts of different countries in your notebook. Now remember, many games that originated long ago in Bharat and still continue to be a part of our culture are known as traditional games. Kabaddi, Kho-Kho and boat race are traditional games. People have practiced different kinds of martial arts in Bharat. Martial arts were seen as method of self-defense. Wrestling, Kalaripayattu, archery, Mallakham, etc. are some kind of martial arts. Now let's look at the new words that we have learnt in this chapter. Traditional means one that have been existing for a long time. Okay. Martial means relating to fighting or war. Regimen is exercise to improve health. And propelling means pushing something forward. Alright, I hope children now you know about the different traditional games of Bharat, and whenever you have vacations and all, do try to play games like Kabaddi, Kho-Kho, Gilli Danda, which have been played for traditions and traditions. So you can know about more games through your parents or grandparents, if they belong to that generation where they have played all these games. Alright, now reread this chapter and don't forget to do the back exercises.